मैं अब टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में थोड़ा बात करूंगा। वो होगा कि अगर मेरे पास x1 is space coordinate and ms1 is my spin coordinate, spin interactions, and x2 is the second particle space coordinate and ms2 is the second particle spin interaction अगर है तो मैं यहाँ पे एक परमुटेशंस ऑपरेटर को अप्लाई करके ये लिख सकता हूँ कि ये होगा x1 ms1 x2 ms2 p12 alpha, which will be x1 sorry x2 ms2 x1 ms1 alpha, and this will apply for bosons है ना, since it is symmetric. Now for my antisymmetric case I can write it as x1 ms1 x2 ms2 alpha, which will be minus of x1 x2 ms2 x1 ms1 alpha. So from here what we can say, these permutations is operating ms portions and x portion. Okay, this permutations operating is ms1 and x. All right, so that's why my permutations operator can be divided into two parts. One is p12 space and one is p12 spin. ना मैं मेरे स्पिन स्टेट को ऐसे लिख सकता हूँ कि वो होगा p12 is equals to 1/2 1 plus of s1 to s2. ऑल राइट, ना s1 s2 को लिखने के लिए एक तरीका होता है, वो है मेरा s1 square is equals to s2 square is equals to half into so 1. So ये होगा 3/4. Now s square is equals to s1 plus of s2 square. So we can see s1 s2 is equals to s square minus of 3/4. यहाँ पे एक h कट स्क्वायर होगा है ना, h कट स्क्वायर, यहाँ पे s होगा रूट ऑफ s इंटू s plus 1 h square, h cut square minus of 3/4 h cut square. Now for my singlet where s is equals to 0, so I have s1 s2 is equals to h cut square by 4. ये होगा for my triplet के लिए and ये होगा 3h cut square by 4 my singlet के लिए. ना मैं मल्टी पार्टिकल स्टेट की तरफ थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ. मेरा मल्टी पार्टिकल स्टेट कैसा होगा, मल्टी पार्टिकल स्टेट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ k प्राइम, मेरा परमुटेशंस ऑपरेटर इज pij, k डबल प्राइम, k प्राइम सॉरी ki plus of 1 is kj. ऑल राइट, नाउ यहाँ पे ये कैसे ऑपरेट करेगा, यहाँ पे है ये i एंड j, सो ये i एंड j पर ऑपरेट करेगा. सो यहाँ पे i j, सो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ k प्राइम k डबल प्राइम k j k i प्लस ऑफ 1 k i. ठीक है, तो अगर मैं मेरा 3 पार्टिकल की तरफ थोड़ा ध्यान दूँ, मैं कंसिडर कर रहा हूँ k प्राइम k डबल प्राइम
के ट्रिपल प्राइम। सो यहाँ पे 3 फैक्टर टर्म होगा, वो होगा 6। सो मैं ये लिख सकता हूँ के प्राइम, के डबल प्राइम, के ट्रिपल प्राइम which is equals to 1 by of root of 3 factor k prime, k double prime, k triple prime plus of k double prime, k prime, के ट्रिपल प्राइम। ऐसे करके मेरा 6 टर्म होगा, वो के प्राइम एंड के डबल, के प्राइम, के डबल प्राइम, के ट्रिपल प्राइम इंटरचेंज करेगा। सो आई कैन गेट 6 टर्म here, these two and another 4. All right. सो मैं अगर यहाँ पर भी परमुटेशंस ऑपरेटर को एक्ट करूँ तो मैं क्या पाऊँगा। सो यहाँ पे मैं एवरी ऑल परमुटेशंस ऑपरेटर को ऑपरेट कर सकता हूँ। वो P12 को मैं ऑपरेट कर सकता हूँ, P21, P12 एंड P21 आर सिमिलर, P13 को कर सकता हूँ, P23 को भी कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, मैं P123 को ऑपरेट कर रहा हूँ। सो इसके लिए ये होगा के प्राइम, के डबल प्राइम, के ट्रिपल प्राइम। सो इसके लिए क्या होगा, फर्स्टली P12 यहाँ पर ऑपरेट करेगा, देन यहाँ पे P13 ऑपरेट करेगा। सो ये होगा के डबल प्राइम, के प्राइम, के ट्रिपल प्राइम, के डबल प्राइम, के प्राइम, के ट्रिपल प्राइम, के प्राइम। ठीक है। अगर मेरा यहाँ पे कुछ डिजेनरेसी है, सो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, के प्राइम, के प्राइम, के डबल प्राइम प्लस आई कैन राइट इट एज 1 बाय ऑफ, यहाँ पे 2 डिजेनरेसी है, सो इसलिए मैं यहाँ पे 2 फैक्टर बाई 3 फैक्टर लिख रहा हूँ, एंड यहाँ पे होगा के प्राइम, डबल प्राइम, ठीक है। तो अगर मैं सेकेंड क्वांटाइजेशन की तरफ थोड़ा ध्यान दूँ, वो होगा कि अगर मैं यहाँ पे मेरा ऑपरेटर है in1 to in राइट। अगर मैं यहाँ पे ऑल ज़ीरो है तो मैं यहाँ पे नल ऑपरेटर पाऊँगा, एंड यहाँ पे अगर सोचो कि वन in I term is 1, only in I term is 1, so I have ki, this is have 1 eigenvalue. So अगर मैं मेरा यहाँ पे ए आई हार्मिशियन को ऑपरेट करूँ यहाँ पे, तो मैं ए आई हार्मिशियन वो जो लैडर ऑपरेटर है ना, वो फर्स्ट ईयर वाला, अगर आप लोगों को ये पता नहीं है कि कैसे ये होगा कि इन 1 to इन आई प्लस ऑफ 1 कैसे लैडर ऑपरेटर ऑपरेट करता है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। सो दैट टाइम यू कैन सी कैसे ये लैडर ऑपरेटर काम करता है। सो अगर मैं ये लिखूं कि यहाँ पे ए आई हार्मिशियन 0, सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 ऐड कर देगा, सो इसके लिए ये होगा क्या, है ना। सो अगर मैं ये लिखूं, ये भी राइट है। सो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि ये होगा
एंड अगेन यहाँ पे ये होगा, राइट। ठीक है ना, चलो। तो अगर मैं यहाँ पे ए लिखूँ कि ए आई जे हार्मिसियन, सो यहाँ पे मैं अगर सिमेट्री एंड एसिमेट्री प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ए जे हार्मिसियन ए आई, इट विल बी प्लस फॉर सिमेट्रिक एंड माइनस फॉर एंटीसिमेट्रिक, ठीक है ना। यहाँ पे आप ऑपरेटर से ऑपरेट मैंने नहीं लिखा था। तो दोस्तों ये था मेरा परम्यूटेशन पर डिस्क्रिप्शन। नाउ मैं अगर वेव फंक्शन पे जाऊँ, नाउ वेव फंक्शन कैन बी रिटन एज, अगर मेरे यहाँ पे साई है, साई x1 x2, सो आई कैन रिटन एज साई x1 साई 2 x2, okay। Now the probability at particle 1 and at x2 direction, so what can I write? This I can say P1 is the mod of psi 1 square integrations of psi 2 square dx2, है ना। Now which ultimately I get psi 1 square. Similarly for P2, now if I write the probability of together, I can write that P is equals to mod of psi x1 x2 square, which I can write all right, this I have probability। अगर आपको कहा जाए कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल अराउंड x1 independent of particle around x2, so how you can write it? So how you can write it? That will be, so I can write that is equals to x1 x2 dx2. Okay, here I have my probability of for this is for p of x1 x2, so ultimately I'll get probability. This is my identical particle theories, and अब अगर मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान दूँ तो मैंने कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया है, आप उनको देख सकते हैं। ओके सो तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? Here I have my n identical spin half particles are subjected to one-dimensional simple harmonic potential. What is the ground state energy for non-interacting particle?
Okay, spin half particle means fermions. ठीक है? For even in now we have for even in the ground state level are I'm considering for it from 0. I'm starting it from 0. So here my last term will be n minus 1 by 2. Alright. Now the energy of system will be E naught, the sum of them uh, into multiplied by 2, since it's fermions. Now you know fermions have two spins, one is up spin and down spin, so that's why we have multiplied it by 2. So here I will calculate, after calculation I will get n square by 4. All right, and my second question is, two identical spin 1 particles, they have two parts. One is orbital part and one is intrinsic part. What restriction we will get? Space part, for space part symmetric. Now here I have considered j is equals to 2, j is equals to 1, j is equals to 0. Here j is angular momentum. So I have for j is equals to 0 psi naught x1 x2, j is equals to 1 psi 1 x1 x2, j is equals to 2 psi 2 x1 x2. J is a higher term, and so that's why j1 is antisymmetric part. Alright, now I have considered j2 as symmetric, higher order term as symmetric. So that's why we will get that the space part will also symmetric. So this is my solve of my next problem. Now get to my look at my next question. What is now? That is the spin 1 particle, the spin 0 particles are situated at the corners of an equilateral triangle, spin 0 bosons. Let us go to the z-axis and at the center of the whole system, free to rotate about z-axis, obtain the magnetic quantum number. Now you know how to calculate magnetic quantum number. So I have just calculate the after rotating z-axis how the system will look like. So it's basically it is the problem that I have discussed it's before. So I am operating it with my permutations operator P12, then it will look like P12 for interchanging 2 and 1, P23 interchanging 1 and 2 and 3. So after that my term will like this. So this is how that equation can be solved. Now looking towards my next question, what is, there are two identical spin half fermions in an infinite side well. Write down the ground state wave function and the energy when the two particles to a triplet state. And again do the same thing for singlet state. Due to the intrinsic interaction, calculate energy shift. Now spins a triplet. Now spin's wave function is symmetric. Triplet means wave functions are symmetric, and singlet mean asymmetric. So you will get one state and triplet for 3 state, as I have discussed it earlier. Now, so my wave functions will look like after exchanging operator sine of pi x1 by L, sine of 2 pi x2 by L, minus of sine of 2 pi x1 by L, sine of pi x2 by L. That's how it will be, and energy will be 1 square plus 2 square. 1 square for 1 is for first particle, it's asymmetric part, and 2 is for second particle, is symmetric part. So 2 pi square h car square by 2 ml square. All right. Now the total energy E is equals to E1 and E2. Now going to my next solve. For S is equals to 0, I will get singlet state.
So spin wave functions are will be asymmetric. So spin wave function is can be written as for singlet state 1 square plus 1 square is pi square h car square by 2 ml square. All right, it will be energy. For singlet state, my wave function psi will be, psi at ground state will be n naught sine of pi x1 sine of pi x2. All right, both are antisymmetric and we have considered both are one state. ठीक है ना? Now for spin triplet state, we have psi of gs for s is equals to 1. Triplet state s is equals to 1. You know that? So n1 sine of pi x1 sine of 2 pi x2 for triplet state it will be one is symmetric and another is antisymmetric. One is antisymmetric, another is two symmetric. So that's why I have written it here, sine of pi x1 by L sine of 2 pi x2 by L minus of sine of 2 pi x1 by L sine of pi x2 by L after operating the exchange degeneracy. Now daily S is equals to 0. The energy I will have for a singlet state minus of lambda n naught square integrations of sine square pi x1 sine square pi x2 by L del of x1 minus x2 dx1 dx2. All right. Here I have again operate the singlet description from here. And again from here I will get the triplet energy which will like that minus of lambda square n1 square sine of pi x1 by L sine of 2 pi x2 by L minus of sine of 2 pi x1 by L sine of pi x2 by L square by into del x1 minus x2 dx1 d2. In a similar manner, after completing the integration, I can get my daily and daily for singlet state and daily for triplet state. Okay, so guys, that's all for identical particle today. Now if you have any questions about any of my discussions, don't forget to comment. I will try to respond as soon as possible. And don't forget to subscribe and click the bell icon that you will get my uploaded video. Don't forget to like to let me know that my video was helpful for you. Thank you for watching. See you at my next video.